Hello, this is Kanika. Welcome back to my channel Gate Decoders. Gate Decoders is dedicated to the computer science and engineering. In this video, I'm going to discuss the very important topic that is memory organization. Memory organization is very important for the GATE exam because from this many questions have been asked in the GATE exam. So in this we'll study about the cache fetching. So what is the cache fetching? To fetch the data from the cache memory, then how much time will it take? So it is we need to calculate the average memory access time. So आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि you have 1000 instructions and there is cache memory and here there is main memory, then how much time will it take to fetch the data from the memory. So we need to find the average memory access time. It means we need to find the access time per instruction. So how we will calculate this? So for this, first we have to understand about the memories. In the computer we have many types of memory: volatile memory, non-volatile memory, temporary storage, or permanent storage. So there are many kind of memories. So memory hierarchy separates the computer storage based on many parameters. So there are many parameters: label, name, typical size, implementation, access time, bandwidth, managed by and backed by. So it depends what is the performance of the memory. On this basis we have divided the memory. So this is your level 0, 1, 2, 3 registers, cache, main memory and secondary memory. The size of the registers is less than 1 KB. The size of the cache memory is less than 16 MB. The size of the main memory is less than 16 GB, and the size of secondary memory is greater than 100 GB. It is a huge size. It is implemented by the multiports. SRAM is nothing but the flip-flops. DRAM is nothing but the capacitors. And this is your magnetic, like magnetic disk and magnetic tapes. Access time. Registers access time is very low. Means CPU can fetch any data from the register within a second. Oh my god, not it is not within a second, but it is in nanosecond. Okay, so it is 0.25 to 0.5. This is 0.25 to 25. This is 80 to 250 nanoseconds, and this is 6 million nanoseconds. So you can imagine how the access time increases as we increase the size of the memory. Okay, so main memory is 80 to 250 nanoseconds. So it's better to bring the data from the main memory to cache memory, because we can access the data from the cache memory in a very low time. Now we have the bandwidth. Bandwidth is one CPU cycle. It means this is your CPU cycle. So this is the CPU cycle of this clock. So within this CPU cycle, let's suppose it is 1 nanosecond. So within this CPU cycle, the CPU can execute one instruction. So it's very low time, or CPU can fetch the instruction. It is 40 to 700 GB per second. It is 10 GB per second, and it is 2000 MB per second. सो यू नो बैंडविड्थ घटती जा रही, मतलब एक सेकंड में आप कितना डेटा एक्सेस कर रहे हो. तो जब मैं कैश की बात करती हूँ तो एक सेकंड में मैं इतना ज़्यादा डेटा एक्सेस कर रही हूँ, दिस इज़ 700 GB. और जब मैं मेन मेमोरी की बात कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग 10 GB पर सेकेंड. बट जब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो एक सेकंड में जस्ट केवल 2000 MB आई एम एक्सेसिंग. सो यू नो बैंडविड्थ कितनी लो होती जा रही है. जैसे जैसे इस जैसे जैसे स्पीड कम होती जा रही है, बैंडविड्थ जो है वो घटती जा रही है. जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे बैंडविड्थ जो है वो घट रही है. सो managed by compiler, hardware, operating system and operating system. Registers are managed by compiler.
देखिए, आपका जो कंपाइलर होता है वो एक प्रोग्राम को कंपाइल करता है और उसको एक मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि द इंस्ट्रक्शन इज़ मूव आर नोट M2000 और ऐड R1 R2. So compiler has the right to which register the data of the memory will be stored, okay, yet to which the variable will be stored, okay. So this is all managed by compiler. कैश इज़ मैनेज्ड बाय हार्डवेयर। अभी हमने पहले वीडियोस में पढ़ा था जहाँ मैंने कैश मैपिंग बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था देयर इज़ अ कैश कंट्रोलर। कैश कंट्रोलर मैनेज द इंटायर कैश, ओके। इफ़ वी गिव the address to the cache, then cache controller specify what is the size of this address and in how many parts we must divide this address, okay. So and cache controller itself finds the data in the cache memory, so it is managed by hardware. Operating system has some responsibility as memory management and the secondary memory management that you will read in the operating system subject. Like memory management, memory में कहाँ पर कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, so it is managed by the operating system. Backed by registers are backed by cache memory is backed by main memory, and main memory is backed by secondary memory, and secondary memory is backed by cd. So like कि अगर रजिस्टर्स में स्पेस कम है तो हम कैश मेमोरी यूज़ कर लेते हैं, कैश मेमोरी में स्पेस कम है तो मेन मेमोरी यूज़ कर लेते हैं, मेन मेमोरी के बाद हम सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते हैं, देन सेकेंडरी मेमोरी के बाद हम डिस्क यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ टाइप ऑफ the structure we have in our computer. So on the basis of the parameters, I can manage all the memories in a pyramid. Okay, this is your register memory at the very top level of this pyramid. So इसका size जो है वो cache memory से कम है. This is your main memory, magnetic disk and magnetic tapes. जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो साइज है वो डिक्रीज़ होता है. साइज जो होगा वो डिक्रीज़ होगा जब हम ऊपर से ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जो साइज है वो बढ़ रहा है और जो एक्सेस टाइम है वो क्या हो रहा है आपका, वो जो है वो भी बढ़ रहा है. तो जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ रहा है, साथ साथ एक्सेस टाइम भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टू फैच द डेटा फ्रॉम द रजिस्टर इट टेक्स द लोएस्ट टाइम and from here it takes the largest time, okay, but the cost will be reduced. जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे the cost will be reduced, ओके, क्योंकि आप मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क फिर भी आपको बहुत कम रेट में मिल जाएंगे, लेकिन आप उतनी ही साइज की यदि मेन मेमोरी खरीदने जाएंगे दैट इज़ रैम, इट विल बी वेरी कॉस्टली, ओके. सो यहाँ पे एक और डायग्राम है फॉर कैश. कैश मेमोरी has many levels in the computer, it may have, okay. So first we have the micro operation cache at the level 0, which is directly connected to the CPU within its core. After that we have the data or instruction cache. Actually we have a cache. So cache is the memory. That memory can have the data and the instruction. But to increase the performance of the computer system, we have separate cache for the data and for the instruction. So for this we have the data cache and instruction cache, and the size of this cache is 128 KB with the speed of 700 GB per second. Data plus instruction cache, this is the cache where we can have the data and the instruction as well. So the size is 1 MB and this is the speed 200 GB per second. So likewise we have these levels. So in the computer it is not necessary that between CPU and the main memory you will have only one cache. No, you can have many caches.
it may be from 1 to n. Okay, so there may be many caches in the computer system. Okay, so one thing I wanna tell you here, like आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि एम बी क्या है. ठीक है, सो मैं आपको बता रही हूँ. यदि हम डेटा की बात करते हैं, डेटा में एम बी का मतलब होता है टू. इट इज़ द मल्टीपल ऑफ टू, टू टू द पावर इट इज़ 20. ओके, मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ, आप उसको देखिए. सबसे पहले लिखिए यहाँ 1 बाइट, देन 1 KB, 1 MB, नेक्स्ट इज़ 1 GB. इतना बहुत है, इससे आगे पूछा भी नहीं जाता. अगर पूछा भी जाए तो उतना ही हम मल्टीपल कर देते हैं. मैं भी बताती हूँ कैसे. अगर हम बात करें डेटा के रेफरेंस में, डेटा की अगर हम रेफरेंस में बात करें या साइज ऑफ द मेमोरी में, या फिर साइज ऑफ द मेमोरी के रेफरेंस में बात करें, तो 1 B इज़ नथिंग बट, ओके, इट इज़ द 1 बाइट. 1 KB is equal to 2 to the power 10 bytes, and 1 MB is equal to 2 to the power 20 bytes. 1 GB इज़ इक्वल टू द पावर 30 बाइट्स. तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हर एक टाइम में 2 to the power 10 से मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ. तो अगर इसके आगे है 1 TB, तो उसको भी आप 2 to the power 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 to the power 40 बाइट्स. सो इफ़ यू आर टॉकिंग about the bandwidth. Okay, so bandwidth depends on frequency, and frequency is measured in uh, 10. Okay, it is in the power of the 10, so it is 1 byte. Here we will write 10 to the power 3 bytes. Next we have here, तो इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 10 to the power 3. सो आप इसको 10 to the power 3 से मल्टीपल करते चले जाइए. नेक्स्ट इट इज़ 10 to the power 9 bytes, एंड नेक्स्ट इट इज़ 10 to the power 12 bytes. सो इस तरीके से यू कैन स्पेसिफाई कि व्हाट इज़ बाइट एंड मेगा बाइट, व्हाट इज़ गीगा बाइट. ओके, सो याद रखना, जब हम डेटा की बात करते हैं, डेटा साइज की बात करते हैं, तो इट इज़ इन द पावर ऑफ 2. और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंडविथ, लाइक वी वर सेइंग इट इज़ GB/second, सो इट वाज बैंडविथ. सो वी विल कैलकुलेट इट लाइक एज 10 to the power 3, 6, 9, 12. Okay, okay, so next we have here, so according to the memory hierarchy system supported memory arrangement and accessing order. See, according to this memory hierarchy, I have arranged the memory in their accessing order. कि CPU कैसे एक्सेस करता है. सबसे पहले CPU जो है वो रजिस्टर्स को एक्सेस करता है. यदि रजिस्टर से डेटा नहीं मिलता है तो कैश मेमोरी को एक्सेस करता है, और कैश मेमोरी से डेटा नहीं मिलता है तो मेन मेमोरी को एक्सेस करता है, और मेन मेमोरी से डेटा नहीं मिलता है तो किसको एक्सेस करेगा, लास्ट आपके पास जो लेवल है दैट इज सेकेंडरी मेमोरी. ओके, सो if let's suppose CPU is performing, yeah, CPU is executing a program. Okay, CPU is executing a program, and in this program we have a memory reference instruction. Okay, so memory reference instruction means these instructions refer some memory location. Let's suppose the instruction R note memory 2000, where you move the data. Okay, so it means move the data from the memory location 2000 to the register R note. Okay, so this is your memory reference instruction. For this, CPU has to generate the address 2000. So CPU refers this address to the cache memory. If the data is found in the cache memory, then it is called the cache hit, and CPU directly access the data from the cache memory into the form of the words. Okay, if the data is not found in the cache memory, then it is called cache hit, and at that time the reference is given to the main memory. So the reference is given
to the main memory. And if there is hit in the main memory, it means you found the data in the main memory. Then the data is brought from main memory to cache memory into the form of block. Okay, into the form of blocks. And if there is miss in the main memory, let's suppose you don't have the data in the main memory, then you have to bring the data from the secondary memory to main memory into the form of pages. So this is the arrangement, this is the access order, and how you bring the data from one level to another level, then this level to another level. So this is all about this. This is managed by computer organization, and this is managed by operating system. Okay, so this is all about the computer organization, memory organization. So I hope you have understood कि CPU कैसे एक्सेस करता है. अब दिस इज़ योर एक्सेसिंग ऑर्डर कि ठीक है, पहले CPU कैश मेमोरी को एक्सेस करेगा, देन CPU मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा, देन सेकेंडरी मेमोरी को, बट डायरेक्टली नहीं करते, एक प्रोसीजर के थ्रू एक्सेस करता है. ओके, सो we have arranged all the memories in some organization, and there are some kinds of memory organization. So we have two types of memory organization which we will discuss in the next video. So do watch the next video for memory organization types. Till then, thank you for listening me.